Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling today? I hope you will be enjoying the best of all. I welcome you in my class that is in English for grade 5 and we are learning unit number 14 and its title is, my dear students, Traffic Issues. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this chapter according to this lesson plan and also according to the SLOs that which SLO will be covered in which lecture. So today I am going to tell you about that. Our first lecture will be lecture number 1 under the title of Grammar. We will learn about modal verbs and we will cover up page 127 and 128. And its SLO will be illustrate the use of can, cannot, may not, should not to express provision, prohibition, doubt and obligation. So my dear teachers, lecture 2 will be reading with accuracy. How we can read with accuracy, and we will cover up page 122 and 123. And its SLO will be apply punctuation rules to assist in developing accuracy and fluency through reading aloud. Okay, so this will be. So next, lecture 3, we will learn under the title of Comprehension. We will cover up page 124, 125 and 126. And its SLO will be apply while reading strategies to interact with the text, to use content to infer missing words. So lecture 4 will be, we will learn about story writing, how we can write a story, and we will cover a page number 129 and 130. So my dear teacher, its SLO will be recognize and describe briefly story elements, tell when and where the story is set, describe the characters in a story, express preferences about them. Retell a story briefly and sequentially. Summarize a short folk tale through gapped summary exercise. Expressing an understanding of story through role play. So my dear teachers, these all SLOs we will cover up in our lecture 4. Lecture 5A, we will read signs and public notices. And we will cover up page 131 and its SLO will be follow instructions in maps, short public notices and sign. My dear teachers, lecture 5B under the title of writing, we will learn about narrative paragraph and we will write question number 10 and page number we will cover 132 and its SLO will be write sentences of your own using correct capitalization, punctuation and spelling. Use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph by narrating an activity and extended surroundings. So these will be our SLOs, my dear students, and in this way, and my dear teachers, in this way we will cover up our whole chapter, whole unit. So now open book, my dear students, page number 122 and we are going to start our unit number 14, traffic issues. Its title is traffic issues. तो आज हम कौन से मसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? ट्रैफिक के मसाइल, जो ये गाड़ियां चलती हैं उनसे हम कौन से इश्यूज बनते हैं और हम वो फेस करते हैं. See there, थीम क्या है इसका? पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप एंड सब थीम इज ट्रैफिक एजुकेशन. मीन्स सिटीजनशिप आप जानते हो ना, शहरियत. जिस मुल्क में, जिस शहर में आप रहते हो, जिस मुल्क में आप रहते हो तो आप सिटीजन हो उस मुल्क के. तो सिटीजनशिप मीन हर सिटीजन की भी एक क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहिए उसे, और वो कैसे करना चाहिए वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो इसका सब थीम, इसका स्पोर्टिंग थीम क्या है? ट्रैफिक एजुकेशन. स्पेशली जो इसका सब थीम है ट्रैफिक एजुकेशन, मीन्स गाड़ियां जो हमारे पास इतनी हमने ले तो ली है लेकिन हमने उनको कैसे कवर अप करना है, उसके बारे में हमें कैसे अपना एक एक चीज मैनेज करके रखनी है. ट्रैफिक के बारे में ट्रैफिक एजुकेशन स्पेशली कि हमने अगर खुद अपनी लाइफ भी सेव रखनी है और हमसे रिलेटेड दूसरे लोगों की भी, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो ओपन योर बुक माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 123. सो हैव यू ओपन? So we are going to start now. Listen carefully. Assalamu alaikum Taha. What is the matter? Why have so many people gathered here? So beta, this is a dialogue. First try to get, this is a dialogue between two persons, two people, two friends. One is Shahroz and one is Taha. Got it? So now who asked? Shahroz is asking from Taha. Okay? क्या पूछ रहे हैं वो? अस्सलाम वालेकुम ताहा, व्हाट इज द मैटर, कि क्या हुआ है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? ताहा क्या बोल रहे हैं?
वालेकुम सलाम। A few minutes ago, a wagon and a motorcycle got an accident. कि थोड़े चंद मिनट पहले कि एक वैगन और एक मोटरसाइकिल ने क्या किया, एक्सीडेंट हुआ, वो एक दूसरे से टकराए। शहरोज, बट हाउ डिड द एक्सीडेंट टेक प्लेस, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ताहा, नाउ ताहा इज रिप्लाइंग, द वैगन ड्राइवर वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट एंड केयरलेसली। वो क्या बता रहा है कि वैगन ड्राइवर कैसे ड्राइव कर रहा था, वेरी फास्ट, बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, तेजी से कर रहा था, और केयरलेसली, लापरवाही से कर रहा था। शहरोज, इट मीन्स द मेन रीजन फॉर द एक्सीडेंट इज वैगन ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग। इसका मतलब ये हुआ। अब शहरोज क्या जवाब दे रहे हैं बेटा, ये डायलॉग है दो लोगों के दरमियान, तो अब शहरोज क्या जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट मीन्स, किसकी ये है, मीन्स मेन रीजन, अहम वजह या कसूर किसका है, वैगन ड्राइवर का, जो बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तेज चला रहा था। तो अब इस पे ताहा क्या कह रहा है, सुनते हैं। Yes, you're right, but the motorcycle rider did not wear a helmet at the time of the accident. It caused several injuries to the rider. So have you got? अब वो क्या कह रहा है, ताहा ने कहा हाँ जी ये तो है, बट मोटरसाइकिल सवार के सर पर क्या नहीं था, हेलमेट नहीं पहना हुआ था उसने, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आई। तो अब गौर से सुनते आइए बेटा, वही सेम पेज है, पेज नंबर 123 पे। शहरोज, that is why my father always uses a helmet and keeps his scooter safe from other vehicles. अब शहरोज बता रहे हैं कि इसी वजह से मेरे अबू क्या करते हैं, हमेशा अपना हेलमेट पहनते हैं और अपनी मोटरसाइकिल को, अपने स्कूटर को दूसरी गाड़ियों से बचा के, मीन्स साइड पे रहते हैं वो। अब ताहा क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। My father drives his car within the speed limit. He is always cautious. Okay? कि मेरे अबू भी अपनी गाड़ी कैसे चलाते हैं, लिमिट में चलाते हैं, अब स्पीड की लिमिट रखते हैं और हमेशा मोहतात रहते हैं ड्राइविंग करते हुए। शहरोज, द इजीएस्ट वे टू अवॉइड एक्सीडेंट is to follow traffic directions and take safety measures on the road. अब शहरोज क्या रहा है कि अगर हमने अवॉइड करना है, हम बचना चाहते हैं किससे, ये जो हम ट्रैफिक हादसात होते हैं रोड पे, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यस, फॉलो ट्रैफिक डायरेक्शंस, मींस ट्रैफिक रूल्स। ओके, ट्रैफिक के कवानीन जो हमें ट्रैफिक रूल्स सारे हैं, तो उनको पर हम अमल करने से हम क्या कर सकते हैं, रोड पे खुद को महफूज रख सकते हैं। अब ताहा क्या कह रहा है, यू आर राइट, लेट वी हैव टू गो व्हाइल वॉकिंग। ओके, अब वो ताहा ने कहा यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेट वी हैव टू गो, कि आओ हम चलते हैं। फिर चलते हुए वो एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे हैं। ओके, शहरोज, Why were you so late for your class yesterday? कि तुम कल अपनी क्लास में इतने लेट क्यों थे। अब वो कल के रीजन पूछ रहे हैं, तो उसे याद आया। So turn next page, my dear students. Page number 124. Have you turned? Good. Oh, it was a painful experience as I got stuck in a traffic jam. अब ताहा ने क्या कहा, ओह ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि मैं क्या हो गया था, ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक रुकी हुई थी, जैम हुई ठहरी थी। शेरो, दैट्स सैड, nowadays traffic jam has become a severe problem for the people of this city. Yes, आजकल क्या है, ट्रैफिक का जैम होना, ट्रैफिक जमा होना, रुकना इस सिटी में क्या हो गया, एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। ताहा, यस यू आर राइट, हाँ जी तुम ठीक कहती हो। शहरोज, Unfortunately, it wastes our valuable time. No action is taken to overcome this problem. क्योंकि जब ट्रैफिक जैम होती है, वो शहरोज कह रहा है कि क्या होता है, बदकिस्मती से इससे हमारा डेफिनेटली, जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम स्कूल आ रहे हैं तो हम स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज, हर वो बंदा जो कहीं जा रहा है और उसने अपना टाइम बचाना है, और टाइम कितना वेरिएबल है वो हम सब जानते हैं, तो इससे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है ना जब हम स्टक हो जाते हैं। ताहा, एग्जैक्टली, nobody comes forward to solve the problem. The leading cause of traffic jams is rickshaws and motorbikes. ये सबसे अहम मसला क्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है, वो रिक्शे और क्या है, मोटर बाइक्स हैं। अब ये ताहा कह रहा है कि कोई भी आगे आके इस मसले को सुलझाना ही नहीं चाहता, सब यही लगे रहते हैं अपने अपने मसाइल में, सारे उलझे हैं, लेकिन इस मसले को कोई भी सुलझाना नहीं चाहता। ओके, सेम पेज इज गोइंग ऑन।
Shahroz, yes, we find hundreds of rickshaws and motorbikes blocking the road the whole day. It is mainly caused by people who try to overtake each other carelessly. कि ये क्यों हैपन होता है? मोस्टली रिक्शा ड्राइवर और मोटर बाइक्स ने रास्ता रोका हुआ है। और ये क्यों हैपन होता है? ये इसलिए वाकई होता है कि क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी निकल जाएं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक जैम होती है। अब ताहा क्या कह रहा है? Right, a considerable number of rickshaws and motorbikes on the narrow roads are contributing much to this problem. There are some other causes too. A considerable number of rickshaws, कि इतने ज्यादा रिक्शे और मोटर बाइक्स हो गई हैं जो इस रोड पे चलते हैं, तो उसकी वजह से ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। So Shahroz, yes, there are too many vehicles in proportion to our roads which are not wide enough. Mismanagement is also a significant factor in this problem. Okay, वो क्या कह रहे हैं कि हमारी रोड इतने खुले नहीं है, बहुत तंग रोड्स हैं, तो जब उन पे ये इतने सारी तादाद में रिक्शाज और मोटर बाइक्स जमा होती हैं तो प्रॉब्लम बनता है। और इसके लिए फिर मिसमैनेजमेंट मीन कोई इंतजाम भी नहीं कर रही, या तो रोड खुले किए जाएं कि हम अपना वैल्यूएबल टाइम बचा सकें, या इसका कोई हल निकाला जाए। ओके, ताहा, you're right, तुम ठीक कहते हो। The unfavorable street conditions and violation of the traffic rules result in the jam in this city. Cut it. अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। कंडीशंस जो है ना वो और भी खराब होती जा रही हैं ट्रैफिक के हवाले से। Let's open page, my dear students, page number 125. Have you turned? Good. Shahroz, of course, but how we can get rid of this curse? अब शहरोज पूछ रहा है, यकीनन, लेकिन हम कैसे इससे निजात हासिल कर सकते हैं? ताहा, I think that this problem can be solved by properly managing of the traffic system. Illegal and unlicensed cars, buses and rickshaws should be stopped from running on the roads. Okay, अब ताहा अपना जो मशवरा दे रहे हैं अपने उसके मुताबिक कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक क्या करना चाहिए, ट्रैफिक के सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जाए। वो कैसे कि जो इलीगल मींस गैर कानूनी तौर पे जो रिक्शा और ये कार्स और चीजें चला रहे हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको रोक दिया जाए कि वो रोड पे ना आए। Shahroz, exactly. Beside this, the roads should be widened and flyovers at the main crossings should be built. The drivers should be properly trained and be sufficient. Traffic police should be employed to control the traffic. अब शहरोज अपना मशवरा क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि क्या किया जाए, सड़कें भी खुली कर दी जाएं और सड़कों पे फ्लाईओवर बना दिया जाए कि ये ट्रैफिक जैम का जो इशू है वो भी खत्म हो, और ट्रैफिक पुलिस को भी जॉब दी जाए ताकि वो कंट्रोल करे, जब ये ट्रैफिक का मसला बने तो वो इजीली कंट्रोल कर सके। Taha, that's right. The authorities should develop all these measures to solve the traffic problems. Shahroz, thank you very much for your valuable suggestions. I'm going to the market. Allah Hafiz. Taha, you're most welcome. Allah Hafiz. See you again. Now, have you got that? That's right. The authorities should develop all these measures to solve the traffic problem. Taha कह रहा है कि authorities mean जो बड़े हैं, चाहे शहरों के हैं चाहे अपने कंट्री के हैं, तो उस शहर के जो लीडिंग पीपल हैं उनको चाहिए कि वो इस प्रॉब्लम को हल करें। तो दोनों अपने अपने रास्ते चल जा दिए। शहरोज कहाँ जा रहा है? आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। अब इस सारे सबक में बेटा आपको क्या मिला? इसमें ट्रैफिक के मसाइल डिस्कस किए गए हैं कि किस वजह से हादसात होते हैं, किस वजह से, और हमें किस तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। सजेशंस भी हैं इस पूरे डायलॉग में, दो लोग आपस में सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो सजेशंस भी दी जा रही हैं कि आपने कैसे कवर अप करनी है ये सारी चीजें। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर नंबर 1। Okay, so see you soon, inshallah. We will enjoy our lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.